Hello everyone. The topic for today's video is uniform circular motion. Till now in the chapter we have understood about the simplest type of motion, that is motion in a straight line, and it is defined as when an object moves in a straight path or travels in a straight line. This type of motion is called straight line motion or motion in a straight line. Now let us move to the another type of motion, that is uniform circular motion, and it is defined as any body when it moves on a circular path or circular track with uniform acceleration. This type of motion is called uniform circular motion. Means कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है एक सर्कुलर पाथ पे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस टाइप ऑफ मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. अब डेफिनेशन में अ वर्ड इज मेंशन, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. We had already discussed in the previous videos. Now we are just revising this word. What does this word depicts? Uniform acceleration means if the velocity changes constantly at a constant rate, then the acceleration is called uniform acceleration. As we already know, acceleration is change in velocity per unit time और rate of change of velocity. So अगर हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. So some other examples of uniform circular motions are merry-go-round, an athlete running on a circular path, or revolving of earth around the sun. So these all things shows us a uniform circular motion. Now let us calculate this formula for calculation of speed of an object. If we are saying the object is traveling around a circular path, it means the object is covering its distance on the circumference of the circle. So as we already know that speed is equals to distance upon time, in this case, in the case of uniform circular motion, speed will be equal to distance travel, that is circumference of the path, upon time. And we already know in maths the formula for circumference of circular path is 2 pi r. Formula for circumference of circle is 2 pi r. So the formulas come here. Speed is equals to 2 pi r upon t, that is 2 into pi into radius upon time taken by the object to travel the distance. Now let us perform an activity to understand what does the change in direction in a circular path or motion means. अगर हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे कॉन्स्टेंटली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. एक स्टोन को हमने थ्रेड के साथ टाई किया और उसे रिवॉल्व किया अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. सो व्हेन यू रिलीज दिस स्टोन एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, यू विल नोटिस दैट जो स्टोन है वो एक डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में मूव कर गया. सो व्हाट जो डायरेक्शन हो गया डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कुलर पाथ, that will be shown in the diagram in the dotted form. So अगर आप किसी भी पॉइंट पे इस सर्कुलर पाथ पे स्टोन को रिलीज़ करते हैं तो जो डॉटेड लाइंस है वो शो कर रही है कि ये डायरेक्शन हमारा स्टोन फॉलो करेगा. व्हाट डज दिस मीन्स? इट मीन्स जो ये डॉटेड लाइंस है ये स्टोन की ओरिजिनल डायरेक्शन है, बट ड्यू टू सम फोर्स वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसके कारण उसकी डायरेक्शन रादर दैन गोइंग स्ट्रेट एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है. नाउ दिस मीन्स वो ओरिजिनल डायरेक्शन को छोड़कर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. सो अब हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है.
अगर if I am saying the object is in uniform this stone is in uniform circular motion and having velocity of 30 meter per second at every point, हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, बट स्टिल एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इसमें, एज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन सेज कि इन सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मीन्स एक कांस्टेंट रेट पे वेलोसिटी चेंज होगी. बट अगर हर पॉइंट पे 30 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी है हमारे स्टोन की, तो हाउ कैन वी से कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, बिकॉज द वेलोसिटी में जो चेंज आया है दिस इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. एज वी नो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन. सो ऑब्जेक्ट रादर देन उसके ओरिजिनल पाथ को फॉलो करने की जगह वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है और हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. इट मीन्स चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी विच कॉजेज acceleration. So that is why we have used the word uniform acceleration here. Hope you all have understood this. Now let us solve certain numericals on the equation of motion concept. First numerical is a motor boat is starting from rest. First of all, how to solve the numericals. हमें numericals कैसे solve करने हैं. जो न्यूमेरिकल में हमें गिवन है वी आर गोइंग टू राइट इट साइड बाय साइड वाइल रीडिंग द न्यूमेरिकल. एग्जाम्पल, अ मोटर बोट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन आवर प्रीवियस वीडियोज़. मीन्स अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, उसमें कोई मोशन नहीं था, इट मीन्स नो वेलोसिटी इज़ देयर. So our initial velocity will become 0 here. Next, on a lake, accelerate at a constant rate of 3 meter per second square. Now acceleration is 3 meter per second square and time is 8 seconds. How far does the boat travel during this time? We have to calculate the distance here. So with the help of the second equation of motion, that is s is equals to ut plus half at square, we are going to calculate the distance because we are given all the values of these variables on the right hand side. So that is why I am using second equation of motion here. So after putting the values and after calculating it, we have got that distance is equals to 96 meter. Now let us move to the second numerical. This is the NCERT based numerical. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. So what the question is saying? It is saying that एक farmer है जो 40 seconds में एक square field की boundary को के around move करता है और उस square field की boundary का एक साइड का मेजरमेंट है 10 मीटर. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर? वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट हेयर आफ्टर 2 minutes 20 seconds. वी आर गिवन टाइम हेयर दैट इज 40 seconds and for 2 minutes 20 seconds we have to calculate its displacement. First we will convert the whole time in seconds. So 2 minutes 20 seconds is equals to 140 seconds after multiplying minutes with 60 seconds. So after this, number of revolution, we will calculate number of revolution in 140 seconds here. To calculate that, number of revolution is equals to total time upon time taken to complete one round. Total time is 140 and time taken to complete one round is 40 seconds. So after calculation we have got that the farmer is taking 3.5 rounds around the square field. For first 3 complete rounds displacement will be 0 because initial position and final position will become same. So when initial position and final position is same, the displacement become 0. Now we have left with the half round.
let's suppose our initial position is a a point of this square. so हाफ राउंड के लिए ऑब्जेक्ट ए से ही स्टार्ट करेगा, ए टू बी एंड बी टू सी. आफ्टर दिस हाफ राउंड इज completed मीन्स उसकी फाइनल पोजीशन सी है. So we will, to calculate the displacement, what we will do, we will make a straight line from initial position to final position. That is, we have joined here AC. So as we noticed, as you know, the angle of a square, all the four angles of the square are right angles. That means these are these angles are of measurement 90 degree. So it means by using Pythagoras theorem we can calculate the hypotenuse here, that is AC. So Pythagoras theorem says that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. So AC, here we come, AC square is equals to AB square plus BC square. After putting the values and calculation, we have got that displacement is equals to 10 root 2 meter. Now our next numerical is an artificial satellite is moving in a circular orbit. Now satellite is moving around is traveling a uniform circular motion. Radius of the orbit is 42,250 kilometers. First we will convert it into meters. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. So this satellite is taking 24 hours to revolve around the earth. So we have to convert our hours into seconds here. So after calculation we have got that radius is equals to 4225 into 10 raised to the power 4 meter, and time is equals to 86,400 seconds. Now this formula for the speed of an object in moving in a circular path is 2 pi r by t. After putting the values and after further calculations, we will got the value